ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो इनपुट ट्रांसफार्मर का आउटपुट टर्मिनल है यहाँ पे सोल्डर किया हुआ है, ये डिसोल्डर कर लीजिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर को निकाल के उसकी जगह पे नया ट्रांसफार्मर डाल दीजिए। ट्रांसफार्मर को निकालने के बाद नया ट्रांसफार्मर लेके यहाँ पे फिट कर दीजिए। यहाँ पे ट्रांसफार्मर बैटरी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका 6 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका अगर 4 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो यहाँ पे 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, 9 वोल्ट का आउटपुट होने वाला ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। नट बोल्ट को लगाने के बाद ट्रांसफार्मर के आउटपुट के वायर को पीसीबी में सोल्डर कर दो।